So good afternoon, students. So this is Sukanta, and let us start this class without delay. Bore ହେଇଯିବନି ପିଲେ କାରଣ ସକାଳୁ କ୍ଲାସ୍ କରିଥାଉଛ ନା ସବୁବେଳେ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଥାଉଛି ଆଉ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ଟା ଟିକେ ମାନେ ଲିଟରେଚର କ୍ଲାସ୍ ସୁଡ୍ ବି ଦ ବିଗିନିଂ ବଟ୍ ଚଳିବ କାରଣ ସବୁ ଭଲ ପାଠ ଯାହା ସରିଯାଇଥିବ ବୋର୍ ହେଇକି ଥିବ ଏବେ ଇଂଲିଶ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ କାରଣ ଲେଖିବା କମ୍ ଖାଲି ଶୁଣିବା ବେଶୀ ନା ନାଇଁ ଲେଖା ଲେଖି କାମ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ନା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଫେମିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ମ୍ୟାଥ୍ସ ଥିଲା ଓକେ so without delay let us start this class. So today's class is a story class. We have already completed one prose class, that is my greatest Olympic prize. It is already over. Then we started second a poem, that is Daffodil, and last period we completed that poem also. And this period we should start a story, that is the doctor's word. That is the doctor's word. You know, this is the first story in our second year English syllabus, and it is in book 2. Okay, the story is in book 2, and let us discuss the title, the doctor's word. Okay, written by R K Narayan. Here it is written, full name of R K Narayan, Rasipuram Krishna Swami Iyer Narayan Swami. Shortly, he is very popular in the name of R K Narayan. Okay, R K Narayan. He is an Indian English writer. Okay, R K Narayan was an English writer, but Indian English writer. So R K Narayan जो नाम तब देखुथियो बिले एटा डेफिनेटली साउथ इंडियन ना लागुची आयर नारायण स्वामी कृष्णा स्वामी लंबा ना देखि परछ ना राशीपुरम कृष्णा स्वामी आयर नारायण स्वामी बुझला कोडी फॉर्म फिल अप करले बोधे होनथियो ताकर ना नहीं तो शॉर्टकट रे आर के नारायण. Then his date of birth was, he was born on 10th October 1906 in Madras. Okay, in Madras or shortly Madras. Date of death also 13 May 2001, just 20 years back. Okay, he died, R K Narayan. And you know why he has occupied a special place in Indian English literature? Because of his imagination. Because of his imagination. And he became more and more popular because of his writing, that is Days of Malgudi, or it is said also Malgudi Days of Malgudi. Malgudi Days. नाटा सुनला बेले लागुछ पिले Malgudi Days. आमे छोट छोट पिला थिला बेले 9th 10th पढला बेलको सोनी टीवी रे देबार गोटे सीरियल Malgudi Days. आमे स्कूल रो दौड़ी आसिकरी से सीरियल टा देखिया पे बसियार. Malgudi Days पिले तो भाबोनी Malgudi गोटे जगह अछि. It is completely imagination, completely imaginary town. कौन सी जगह Malgudi नहीं, बालीगुड़ा अछि बट Malgudi किछि नहीं. बट से गोटे imagination, imaginary town. जिदा आमे कहे बाहुबली मूवी, that is also an imaginary town. So Mahesmati na Mahesmati kujo, is it in the geography book, geography location, in history? No, it is not like that. It is an imaginary town and written by the writer. So Days of Malgudi or Malgudi Days is very famous writing. And in this writing or in this contribution, you will get lots of things which seems very close to our social life. Very close to our social life. And also in this society, how slum people are living. Okay, how slum people are living, their way of living, their style of speaking, everything is described.
In this town, you can get rich people as well as poor people. Okay, and also it is completely interrelated to human activity, social activities. Okay, so his narratives highlight social context and provide a feel of his characters through everyday life. So its story is interlinked to day-to-day life or everyday life. ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଜଡ଼ିତ। ଓକେ, କାର ଲେଖା? ଆର୍ କେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଲେଖା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସହ ଜଡ଼ିତ। ଓକେ, and you know he is a very genuine person. It is said that he is a genuine person. He has brought out the humor and energy of ordinary life. What do you mean by humor? Humor means joke, fun, happy, pleasure, comedy. That is humor of life. You know, ordinary people, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଦିନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଭିତରେ ସାଧାରଣତଃ ଖୁସି ନଥାଏ। But he always tries to drag the humor from this ordinary life. ଏ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଖୁସି କୋଉଠି ଟିକେ ପାଇବା ତାଙ୍କ ଲେଖାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ। ଓକେ, so he has created a fictional town called Malgudi. ମୁଁ ଯୋଉଟା ତମକୁ କହୁଥିଲି Days of Malgudi. Malgudi, it is completely fictional town. That is imaginary town. There is no fixed town but fictional. What do you mean by fiction? Fiction means imagination. Fiction means imagination. The town is completely an imaginary town. You cannot get in the history, in the geography book, okay, of India or world. That is the skill of a writer. That is the skill of a writer. And he can create any new things. He can write any new things from his imagination. You know, he has got Filmfare Awards because of his writing. He has also got Padma Vibhushan Award because of his writing. So have you got about R K Narayan? He is definitely an English writer, Indian English writer, South Indian English writer, and he was born 10th October 1906 in Madras and died just 20 years back, that is 13th May 2001 in Chennai. And this topic, doctor's word, derived from, okay, his Malgudi Days. You know, Malgudi Days is book, and doctor's word is from the story of Malgudi Days. Okay, the story of Malgudi Days. It is from Malgudi Days. So without delay, let us start about this topic, the doctor's word. Definitely, you must have got about the poet, about the writer, and about his birth, about his dates, about his contribution, etc. and etc. Okay, और भी गुड़ाए कंट्रीब्यूशन ताकर अच्छी, but तमें प्लस टू पे बहुत कंट्रीब्यूशन भी लिखिया दरकार नहीं, हला हमें जस्ट जितनी लिखी पाले Malgudi Days and about doctor's word, it's enough. कारण नॉर्मली हमारा जो 5 मार्क्स क्वेश्चन आछी हला जदी 20 मार्क्स क्वेश्चन आस्तांदा ताला हमें ताकर अधिक कंट्रीब्यूशन लिखितांदे, अधिक बुक कोन कोन लेक्चर से विषय लिखतांदे, हमर डायरेक्ट टॉपिक ऊपर क्वेश्चन ही आछी, बुझा पड़छ ना, हमर क्वेश्चन जा डायरेक्ट टॉपिक रु आछी. सो नो नीड टू राइट मोर कंट्रीब्यूशन, बट वी शुड राइट अबाउट द derived form, from which chapter it is derived, from which, okay, book it is derived. So we got, then come to the title doctor's word. टाइटल रू टिके अलग अलग लगन पले डॉक्टर्स वर्ड माने डॉक्टर को कहबा कथा. एक्चुअली यू नो डॉक्टर्स वर्ड का पे इंपोर्टेंट, फॉर whom the word of a doctor is very important.
Obviously, for a patient, doctor word क्या भी important, but patient भी important. डॉक्टर जहाँ कहे पेसेंट पे सेटा बहुत इंपोर्टेंट है तार अर्थ गोटे डॉक्टर बस चा टे आण जो चा टे आण बोली कहला ता मिसेस को दैट इज नॉट इंपोर्टेंट बिकॉज दैट इज द वॉइस ऑफ ए हस्बैंड टू हिज वाइफ ओके इट इज नॉट द वॉइस ऑफ ए डॉक्टर but it is the voice of a husband to his wife. But when doctor starts treatment and gives opinion regarding the patient, regarding the situation of the patient, and also regarding the medicine, regarding the tips, then they are very, very important for the patient and also his relatives. They listen eagerly. They listen eagerly what the doctor is saying. This is doctor's words. Okay, this is doctor's word. Word of a doctor is called doctor. And you know, this is the COVID pandemic period. The role of a doctor, you know very well, it is very, very important. And doctors are the second God. Doctors are considered as the second God. They protect us. Sometimes they save us our life. They try their level best to save the patient's life. They don't think about themselves. They don't stay at home. We all stay at home, but doctors are not staying at home. They have to go to hospital. They have to treat the patient. You know, some of the doctors in the first COVID pandemic, most of the doctors died. They sacrificed their life. Yes or no? They sacrificed their life. They don't fear. They are really the best option, the best profession. Okay, like a soldier and a doctor. Because of them, we are safe. So we should obey doctor's word. But another thing, doctors should be very kind-hearted. Doctors should be very punctual. Doctors should be very experienced. And doctors should show real paths to the patient. That you should not go this path. But nowadays, you know what is going on. They try to earn more, showing different paths. Suppose गोटे पेसेंट आसी ताको से रोग हे नथिबो बट ताको से सब टेस्ट करिया को दिया जिवो सो इट इज नॉट द रियल प्रोफेशन ऑफ ए डॉक्टर द डॉक्टर शुड बी सोबर हार्ड वर्किंग काइंड हार्टेड एंड फ्रेंडली ओके सो इन दिस टॉपिक राइट सो इन दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस some of the characters of this story because without characters no story is there. Without character, no story is there. So in this story, first character, number 1, Dr. Raman. Dr. Raman. Second character, Gopal. Second character, Gopal. Okay, then third character, little small characters are there. Gopal's son, name is not given, and Gopal's wife, little bit role, and assistant, okay, whose dialect is there, and also a nurse, okay, and very, very important. These two characters. Okay, in this story, doctor's word, important characters are there. First one, Dr. Raman. Second one, Gopal. Then Gopal's son, Gopal's wife, an assistant, a nurse. And definitely, the assistant and nurse is connected to Dr. Raman. Yes or no? Dr. Raman को क्या connect? Assistant, doctor को assistant, and a nurse also
a helper of the doctor. Next character Gopal, Gopal's son, Gopal's wife. These three are one character from one family. ଏବେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ ଏ ଷ୍ଟୋରୀରେ କିଏ କିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଲେ ଡକ୍ଟର ରମନ assistant and a nurse, Gopal, Gopal's son and Gopal's wife. But I have also noted the main characters are Dr. Raman and Gopal. Let me introduce again what is the relationship between Dr. Raman and Gopal. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତମକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଡକ୍ଟର ରମନ କିଏ ଆଉ ଗୋପାଳ କିଏ. Actually Dr. Raman is the main character because the title says that doctor's ward means Dr. Raman's ward. Doctor's ward means Dr. Raman's ward. And Gopal is the best friend of Dr. Raman. So the relationship is friendship, means best friend. Okay, Gopal was the best friend of Dr. Raman. Dr. Raman also the best friend of Gopal. But Gopal's profession is different. Dr. Raman's profession, you know, doctor agar profession कौन है पारे? Treating the patient or doing treatment to the patient. Okay. अब देखिए मैं डॉक्टर रमन विषय कहल जाउची. जोड़े आपको स्टोरी आउट इजी हिजो. Dr. Raman was an experienced doctor. He was an experienced doctor, means very good doctor. Doctors are, there are so many doctors, but some doctors are very good, some doctors are average, some doctors are not so good. But Dr. Raman was a very experienced doctor. Okay, he was an outspoken doctor, means he spoke everything else before the patient. He didn't want to hide anything else before the patient. What he saw, okay, spoke everything else about the future condition of the patient. जदि गोटे से पेशेंट को ट्रीटमेंट करंदी से संगे संगे कौन करंदी पेशेंट रो कंडीशन विषय से कह दिंदी हला जे बापा तू आ बेसी दिन बंचिबुनु आ बड हले 6 मास बंचिबु कारण तोर कंडीशन एमिति. अच्छा पहले एमिति कहले भल ना खराब भल भी अच्छी खराब भी अच्छी. खराब कौन हो पारे ना जदि गोटे पेशेंट जानिबो से आ 6 मास पर मरि जिवो से आ 6 मास पर्यंत बंची परियो कि बोले आउ 6 मास बंचियोनी 4 मास रे पळे अछि बा जदि गोटे पेशेंट जानिबो से आ 4 घंटा पर मरि जाउछि से आ 4 घंटा बंचियोनी से हार्ट अटैक हे तो तार कार्डियक अरेस्ट हे जइथिबो से जल्दी मरि जिवो. ताको जदि आपण कॉन्फिडेंस देबा नाइ ना तो बंचिबो किछ असुविधा नै तो से 4 घंटा बाद आउ 8 घंटा 8 मास बंची जाय पारे. सो एटा गोटे माइनस पॉइंट ता भाई परिया ही वाज अ वेरी outspoken person and you know his visiting fees was very high. जो आमे गोटे थर विजिट कले डॉक्टर को पैसा दोचे 200 हो कि 400 हो कि 500 दिस इज द विजिटिंग फीस फॉर वन चार्ज थरे मिसे पे वन विजिट पे एति चार्ज प्रति डॉक्टर किछ किछ रखि था. हिज विजिटिंग फीस वाज वेरी हाई. दैट इज प्लस और माइनस. गरीब लोग पे माइनस रे धनी लोग पे प्लस क्रिटिकल पेशेंट पे प्लस तेरे एटा माइनस एंड प्लस कर रखि दोछि. कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर रमन बिकॉज़ हिज विजिटिंग फीस वाज very high. Eta plus kono he was an experienced doctor. Okay, experienced doctor. He was outspoken, means straightforward doctor. He was a very straightforward doctor. His visiting fees was high. Visiting fees was very high. Another plus point, that is plus point. If he found a little idea regarding the survival of the patient, जदि ताको गोटे छोटिया आशा मिली जाए जे पेशेंट बंचिबार गोटे क्षीण आशा बा छोटिया आशा देखा जाए ताहाले से छाड़िबेनि केबे. He did not withdrew
sorry, he did not withdraw himself. He got ready and stepped into the arena and started treating the patient. And sometimes there are so many examples. He dragged the life from Yama's hand. आ बहुत उदाहरण अच्छी से जम हाथरू पेसेंटर जीवन को छड़े धरिक पलि आसे जमी सावित्री सत्यवान जीवन धरिक पलि आसते कंडीशन करके या कंडीशन ना जबरदस्त जम हाथरू जीवन धरिक पलि आसे दैट इज प्लस 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 तीनटा प्लस दे रहा है दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ डॉक्टर रामन he did not withdraw himself when he found a little hope he entered into the arena and started a treatment and dragged and wrested the life from Yama's hand. This is the first point. Okay. Open your book. I have already given you. Okay. Right. I have already given you a small photograph about Dr. Raman and how is Dr. Raman. अच्छा पहले आम जो गोटे डॉक्टर पाक जाऊे गोटे डॉक्टर आमको हार्ड वर्ड कह आमको भल लगे ना सॉफ्ट वर्ड कहले भल लगे ऑब्वियसली सॉफ्ट वर्ड कहले भल लगे सो व्हेन वी गो टू एनी डॉक्टर वी नीड सूदिंग वर्ड कंफर्टेबल वर्ड ओके इन सॉफ्ट वॉइस आ गोटे डॉक्टर थे मैंने बहुत रियूड भाषा व्यवहार करेंगे बहुत रियूड भाषा व्यवहार करेंगे गाली गुलज कला है कड़े पलि आस एड़ा कौन अवस्था कर रखी चले चले तो सेमती देखले से डॉक्टर जाक आम कौन राग लगुव कि भी करें बट आम टे ऑकवर्ड फील हुए ओके आमको अनकंफर्टेबल फील हुए अनसेफ भी फील हुए है देखिए ये डॉक्टर केमिकार मुझे दे दी आगे आइडिया पीपल केम टू हिम व्हेन द पेशेंट वाज ऑन हिज लास्ट leg. Dr. Raman often burst out, why could not you have come a day earlier? The reason was obvious, visiting fee 25 rupees and more than that, people like to shriek the fact that the time had come to call Dr. Raman. For them, there was something ominous in the very association. The story started, people came to him. People came to him. ठीक है मिले बेसी ना तुमको डॉक्टर रमन कहदेली तो डॉक्टर रमन विषय कहदेली तब आखि बुझे कहि परियो पीपल केम टू हिम रेफर्स टू ऑब्वियसली डॉक्टर रमन हिम का बुझुची डॉक्टर रमन तो लोक माने तांको पाखु आसुतिले केतेबेले आसुतिले जेतले देह खराब होतिला ना देह खराब हेले पेशेंट डॉक्टर पाखु जीवो एटा तो स्वाभाविक बट कौन when the patient was in his last leg what do you mean by sorry on his last leg what do you mean by on his last leg शेष गोड़ कुआड़े आसला लास्ट लेग मीन्स शेष गोड़ लास्ट लेग्स मीन्स शेष दीटा गोड़ मत तो किसी बुझा पड़े तुम कौन बुझल when patient देखो ना when the patient was on his last leg जेतेबेले पेशेंटा तार शेष गोड़ में ठिया हिबो अर्थात सीरियस कंडीशन struggling for last breaths standing on the verge of death waiting for death this is called last leg जोटा हम कहे आ बंचिबार आशा क्षीण जेतेबेले हो जाए आ बंचिबार सब आशा जोठी मरी जाई थाए when all doors are closed for the patient for survival then the patient visited to Dr. Raman okay this is called last leg got it बुझा पड़ला on his last leg means serious condition आमे ओडिया रे कोने ए लोकटारे गोटे गोड़ घरे आ गोटे गोड़ मसाणी रे आमे ओडिया रे कहछे ना so why we say like that this is called last leg this is called last leg ओडिया रे सुनला ना गोटे गोड़ घरे आ गोटे गोड़ मसाणी रे so this is called last leg so when the patient was in his last legs they visited to Dr. Raman
But what did Dr. Raman do? Dr. Raman often burst out. Burst means what? माने आम इमोशनली बस्ट हो रागिले भी बस्ट हो इमोशनली भी बस्ट हो ओके सो ही इमोशनली स्पोक आउट ऑफ एंगर स्पोक एटी निश्चित भाव में आउट ऑफ एंगर रे जीवो बस्ट मीनिंग सो ही बस्ट आउट मीन्स स्पोक आउट एंग्रीली व्हाई कुड नॉट यू हैव कम ए डे अर्लियर कहीं तुम गोटे दिन आगुरी आसुन सब पूरा सीरीयस कंडीशन में आसुच आउ टे गोटे दिन आगुरी आसले ही ना एत समय कहीं तुम वेट कर पेसेंट अवस्था दिन दिन खराब हो आउ टे आगुरी आने कथा सो दिस इज द कॉमन वर्ड ऑफ डॉक्टर रमन टू द पेसेंट तुम मत पचारे सर कहीं सब पेसेंट को से कहीं गाड़ी करते ना सब सीरीयस पेसेंट जाक पाक आसुले नॉर्मल पेसेंट किए भी आसुन व्हाट इज द रीजन कहीं नॉर्मल पेसेंट मैंने आसुन the reason was obvious visiting fees that is 25 rupees so visiting fees was very high that is 25 rupees तब कहे सर 25 rupees सर आम गुपचुप खाई 25 rupees चाट खाइले 25 rupees तो बहुत चीप अच्छी टिफिन खाइले 30 आम 30 टा 40 टा खाऊ 25 टका नो It is not the story of today. It is the story of that time. And this 25 rupees is equal to this much approximately. 2500 टंका 2500 टंका आज डेट रे से समय 25 टंका जहाँ थिला आज डेट रे 2500 टंका था अच्छा पिले हमको जतले किछि छोटिया पुटिया देह खराब होछि आमे सान डॉक्टर पाखु जीवा ना बड़ डॉक्टर पाखु जीवा छोट देह खराब हेले साधारण खाऊ टे इच्छा होनी छोटिया छोटिया देह खराब लूज मोशन हेला थंडा ज्वर हेला ना आजिकल थंडा ज्वर तो प्रबल डर ना नहीं तो एमती छोटिया काश मास टी हेला थंडा ज्वर टी हेला बा लूज मोशन हेला आमे साधारण डॉक्टर पाखु जीवा 200 टंकिया डॉक्टर पाखु जीवा ना 2500 टंकिया डॉक्टर पाखु जीवा ऑब्वियसली आमे 200 टंकिया डॉक्टर पाखु पळा काम केदी सर जीव अल्प पैसा रे 2500 टका आप डॉक्टर पाक गले सी 2500 टका विजिटिंग फीस नब आउ मेडिसिन लिख बोले आपको 10,000 5,000 खर्च करिया पड़े छोटिया जिनस बुझा पड़छ तो व्हाई पीपल डिड नॉट कम टू डॉक्टर रमन इन नॉर्मल स्टेट बिकॉज विजिटिंग फीस वाज वेरी हाई दैट इज 25 rupees that's why people avoided Dr. Raman to go in normal state okay to go or to visit in normal state okay and more than that people like to shrink the fat shirk shirk means avoid shirk means avoid so people wanted to avoid the fat actually se mane सत्य कोन लुचेबा को चेष्टा करथिले actually सत्यटा कोन ना visiting fees was very high 25 टंका visiting fees अच्छा बोले इमेजिन करो तुम डॉक्टर रमन पाक गोटे पेशेंट धरि जाइछ डॉक्टर रमन गाड़ी स्टार्ट कर दिला काई आ गोटे दिन आसलोनी आ गोटे दिन कि दि दिन आगुर आस्तांत तुम सेठी कोन सर आपण काई 25 टका करछथि एते पैसा काई visiting fees करछथि कोइ पेरे कि नाही तबे एवॉइड करिया कोन नाही सर टिका हमर भूल होला हम याड रहलो से काम रहलो आ जानि पारलुनो एमिति एका कहब बाध्य आमे केबे भी कहि परियन जे आपनकर विजिटिंग फीस बहुत अधिक अछि सो वी कैन नॉट से दैट योर विजिटिंग फीस इज वेरी हाई बट वी वांट टू अवॉइड द फैक्ट वी वांट टू अवॉइड द फैक्ट से लाइन रे देखो भल से बुझा पड़ियो कि नहीं एंड मोर देन दैट पीपल लाइक टू सीक द फैक्ट दैट that time had come to call in Dr. Raman. For them, there was something ominous in the very association. For them, there was something ominous when they came to know. Something warning is there. Something threatening is there. Something ominous is there. Fatal is there. ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଅଛି ତା ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ଥ୍ରେଟନିଂ ଅଛି ଲାଇଫ ସହ
तो बेस्ट हम आम डॉक्टर रमण पाक पलैबा लास्ट डिसीजन डॉक्टर रमण दे देबे ए पेशेंट बंचिबो ना मरिबो किए कहबो डॉक्टर रमण ही दे देबे दैट्स व्हाई पीपल सिलेक्ट डॉक्टर रमण when the big man came on the scene it was always a quick decision one way or another one plus point is that when this big man seen here big man refer to dr raman big man refers to dr raman ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଡକ୍ଟର ସିନ୍ को appear हुଅନ୍ତି बा पेशेंट ର कंडीशन को ट्रीट करନ୍ତି either or डिसीजन देबे से बंचिबो बोले निश्चित भाव बंचिबो मरिबो बोले निश्चित भाव मरिबो से एईटा कि सेटा कर देबे सो नॉर्मली पेशेंट माने सेति पे सेठी डॉक्टर रमण तक जानती 25 टका देले देबा किंतु फाइनल रिपोर्ट आमे पेशेंट विषय मिल जिवो there was no scope or time for any kind of wavering and whitewashing what do you mean by wavering or whitewashing डॉक्टर रमणकर नेचर नहीं जे किछि कथा को लुचे देबा किछि कथा को लुचे दा वेवरिंग माने कोन इंडिसिजन व्हाइट वाशिंग माने कोन कवर आमे जति घरटा को व्हाइट वाश करछे कवरिंग कर दोछे से भीतर ब्रिक अछि से भीतर सीमेंट अछि सब जको कवरिंग कर दोछे कोन भी व्हाइट वाश करिकरी आमे ता कवर कर दोछे दिस इज कॉल्ड व्हाइट वाशिंग सो डॉक्टर्स नेचर वाज नॉट व्हाइट वाशिंग डॉक्टर्स नेचर वाज नॉट गिविंग इंडिसिजन because long years of practice of this kind had bred in the doctor a certain cut truthfulness long years of practice बहु वर्षर प्रैक्टिस करथिबा जोगु आज डॉक्टर डायरेक्ट डिसीजन दे परछन्ती ओके सो BRED ब्रेड माने इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ब्रीड माने तमे बायोलॉजिकल जानथियो जन्म ग्रहण करबा ओके किछि जिंस जन्म ग्रहण करबा लॉन्ग इयर्स ऑफ प्रैक्टिस बहु वर्षर प्रैक्टिस ताको मन भितरे गोटे जिनिस जन्म ग्रहण करिछि टू से कट ट्रुथफुलनेस व्हाट यू मीन बाय कट ट्रुथफुलनेस जोटा के हम ओडिया रे कहचे अप्रिय सत्य कथा जो सत्य कथा कहले हमको बेसी कष्ट हुए सुनिया को बहुत कष्ट हुए दैट इज शार्प वर्ड कट ट्रुथफुलनेस मींस व्हाट दैट इज वेरी शार्प वर्ड को सर का विषय से मैंने कहती का विषय डॉक्टर रमण कहती पेशेंट विषय डायरेक्ट कह देबे जे तू आ बंचिबुनी दैट इज वेरी शार्प वर्ड फॉर दैट वेरी रीजन हिज ओपिनियन वाज वैल्यूड एंड ही वाज नॉट ए mere doctor expressing an opinion but a judge pronouncing a verdict he was not a mere doctor mere mere means only so he was not ए मियर डॉक्टर से केवल डॉक्टर नथले पिले से मते गोटे जज भी थिले तमे कह सर डबल चाकरी याडे जज चाकरी याडे डॉक्टर चाकरी किमिति करथिले नो ही वाज नॉट लाइक दैट जज हु नॉर्मली गोज टू कोर्ट पुटिंग ऑर्डर नो बट ही वाज ए जज फॉर द पेशेंट ही वाज गिविंग verdict means judgment note down the word verdict 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 means judgment सी जहाँ भी जजमेंट देउतले पेशेंट पर सेटा ही फाइनल डिसीजन होतला बिकॉज़ ही वाज जस्ट लाइक ए जज एट गोटे मेटाफोर यूज हला आपने बुझि परछो ही वाज जस्ट लाइक ए जज ओके सो थैंक यू स्टूडेंट्स रेस्ट पार्ट विल बी डिस्कस लेटर कौन सा सवाल नहीं अरे वीडियो रख लिया अभी हां ये तो कर दिया सारा ये ये 3 लाइन में आता है क्लास में भी है ना तीन लाइन तले मैसेज लेके छाड़ दो नहीं स्टार्ट हो चला so he was not a mere doctor expressing an opinion but a judge pronouncing a verdict he was not a mere doctor से केवल डॉक्टर नथले से मध्ये कोन थिले गोटे जज थिले कार जज थिले पेशेंट मानकर कंडीशन कहिबार जज थिले पेशेंट मानकर भविष्य कहिबार जज थिले ओके द पेशेंट्स लाइफ हॉग ऑन हिज वर्ड्स पेशेंट्स लाइफ हॉग ऑन हिज वर्ड्स सते जेमिति लागुथिला
पेसेंट रो जीवन टा तांकर वर्ड रे झुलुची पेसेंट आश्चर्य होइके ठिया हेतिबो डॉक्टर कौन कहते मु बंचीबी ना मरीबी बंचीबी ना मरीबी डॉक्टर रमन कहले यस तू बंचीबू बोले सांगे संगे पेसेंट खुशी होता नाई रे बापा तू बंचीबू सांगे संगे मूड अफ होता से मरी जाता दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट पेसेंट्स लाइफ hung on his words. This never unduly worried Dr. Raman. He never believed that agreeable words ever saved life. He did not believe that agreeable words ever saved life. से केबे विश्वास करनथले जे मिछ कहिबा बा किछि पेशेंट को कॉन्फिडेंस देबा जा द्वारा कि पेशेंट भलो होई जबो दैट इज एग्रीएबल वर्ड्स. He didn't believe that agreeable words ever saved life. केबे भी गोटे पेशेंट रा जीवन कथारे बंची जीवो सिमिति रे से विश्वास करनथले से एक्चुअली विश्वास करथले ठीक ट्रीटमेंट कले ही पेशेंट रा जीवन बंचिबो. He always believed that proper treatment can save the life of a patient rather than giving agreeable words. Okay. Then he did not think it was any of his business to provide unnecessary dope when, as a matter of course, nature would tell them the truth in a few hours. He did not think it was proper. What do you mean by dope? Here dope means really dose, medical word, but here it stands for hope. Stand for hope. डॉक्टर रमन केबे भी भाबु नथले जे मु होची गोटे डॉक्टर मोर बिजनेस बा मोर जॉब नाही बा मोर कर्तव्य नाही मु पेशेंट को अननेसेसरी होप देबी. मु जानि छि पेशेंट ता मरि जिवो मु ताको काहे कि अननेसेसरी आशा देबी. दिस इज द बिलीफ, दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ द डॉक्टर. सी तो मरिबो पेशेंट कंफर्म मरिबो मु ताको अननेसेसरी जदि होप देबी समस्त खुशी हे जे बंची गली तार किछि घंटा पर पेशेंट जदि मरि जिवो मते निश्चित भाव गाली करिए सर आप कहते पेशेंट बंची बोली आम पेशेंट मरीगला तो सही मोर वैल्यू गुड रही. सो दैट्स व्हाई ही सेड दैट ओके नेचर वुड टेल देम द ट्रूथ इन ए फ्यू आवर्स. किछि घंटा पर तो सत कथा पदा को पळे आसो तो काहे कि मु सत कथा कहबिनी काहे कि मिछ कथा हम कहबी. However, he gleans the faintest sign of hope. What do you mean by faintest? Means small, thin, slender. जदि गोटे छोटिया साइन माने सिंबल जदि गोटे छोटिया आशा तांको देखा जाए ग्लिम्स मीन्स सॉ और फाउंड जेतेबेले से गोटे पेशेंट रो बंचिबार छोटिया आशा तांको देखा जाए ही रोल्ड ऑफ हिज स्लीव. स्लीव रे जानछ तो हाथ जो शर्ट आ पिनछे ही रोल्ड ऑफ हिज स्लीव माने तो भाबथियो से सबले फुल शर्ट पिनथले ही रोल्ड ऑफ हिज स्लीव मीन्स गॉट रेडी. जिते छोटिया आशा ताको देखाउतला he got ready and stepped into the arena. arena arena means area. Arena means area. He stepped into the arena. It might be hours or days, but he never withdrew till he wrested the prize from Yama's hands. जेतेबेले सी ट्रीटमेंट रो एरिया को डेई पड़ुतले माने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दोथले से केबे भी सरेंडर कर नथले. ही पारे केते घंटा पड़ो ही पारे केते दिन भी पड़ो ही नेवर विथड्रू से केबे हेले सरेंडर कर नथले टिल को पर्यंत सरेंडर कर नथले. ही रेस्टेड द प्राइज फ्रॉम यमस हैंड. रेस्टेड द प्राइज. प्राइज मींस योर लाइफ. इट इज ए मेटाफोरिकल वर्ड. प्राइज स्टैंड्स फॉर लाइफ. जमा हाथ रे को प्राइज डे अछि रे वर्ल्ड कप अछि ने कोन प्राइज ता धरि पळे आसी. ही रेस्टेड द लाइफ. हियर प्राइज रेफर्स टू लाइफ. रेस्टेड WREST. रेस्टेड मींस टेक. WREST. रेस्टेड मींस took something by force. took something by force माने फोर्सफुली गोटे जिंस को टाणी आनिबा जो स्नैच करके आनिबा. तुम गाड़ी रे जाउछ तुम सुना चल चोर आसला टाणी धरि पड़ला दैट इज कॉल्ड स्नैच. दिस इज अरेस्टेड. टुक समथिंग बाय फोर्स. सो ये जम हाथरू पेशेंट रो जीवन को धरिक पळे आसुतले के डॉक्टर रमन.
So this is all about Dr. Raman. Thank you, students. Okay, so next class we will discuss about second unit and about also Dr. Raman's story. Thank you.